Good morning, students. So today we will discuss about the minerals. Then what is minerals? Definition of minerals. Minerals constitute 3 to 4% of total body weight. Minerals are inorganic elements, some of which form part of the body structure, while other act as catalyst in various metabolic reaction. Okay, so what is mineral? In our body, 3 to 4% of total body weight. Okay, if we have 100% body weight, so in 100%, 3 to 4% of our body weight is minerals. Okay, then minerals are inorganic elements, some of which form of part of the body structure. Okay, so minerals are not organic, it's an inorganic element, and it helps in body structure, and it maybe you can say it found in our body structure. Okay, part of the body structure. Then while other act as catalyst in various metabolic reaction. Okay, and other action of minerals are catalyst, act like catalyst in various metabolic reactions, so it helps in also our metabolic reaction. Then classification, they can be classified into two categories. First is macro minerals and second is micro minerals. Okay, so we all know what is macro and what is micro. Then micro minerals, the minerals present at level less than 0.05% in the human body are defined as micro minerals. Then micro minerals are also known as trace element. Some micro minerals are okay. So what is micro mineral? हमारी बॉडी में द मिनरल प्रेजेंट एट लेवल लेस देन 0.05%. ओके, सो हमारी यानी कि ह्यूमन बॉडी में 0.05% मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स प्रेजेंट होता है. ओके, देन माइक्रो मिनरल्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रेस एलिमेंट. माइक्रो मिनरल्स को और किस नाम से जाना जाता है? ट्रेस एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है. सो सम माइक्रो मिनरल्स आर, these are the example of micro minerals: iron, iodine, zinc, copper, fluorine, selenium, manganese, cobalt, and molybdenum. Okay, then macro minerals, these are those minerals which our body requires in maximum amount, at least 100 mg per day. The minerals which belong to this category are, okay, so मैक्रो और माइक्रो. मैक्रो मतलब स्मॉल, बट माइक्रो मतलब मैक्रो से भी ज़्यादा स्मॉल. ओके, सो मैक्रो मिनरल्स जो है वो क्या बोल रहा है? हमारी बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट में एटलीस्ट 100 mg पर डे के हिसाब से हमारी बॉडी को नीड होती है मैक्रो मिनरल्स की. ओके, द मिनरल्स विच बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो मिनरल्स: कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, sodium and potassium. First we will discuss about the iron means micro minerals. Okay, so what is iron? The amount of iron in the body of adult male is about 50 mg per kg, or total of 3.5 gram. In the woman it is about 35 mg per kg, or total of 2 to 3 gram. Okay, so हमारी बॉडी में एडल्ट में मेल में कितना होता है आयरन? 50 mg पर केजी, और या फिर 3.5 ग्राम, और वुमेन्स में 35 mg पर केजी, या फिर टोटल 2 to 3 ग्राम. ओके, देन आयरन इन द बॉडी इज प्रेजेंट इन सेल्स. ओके, हमारी बॉडी में आयरन कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल्स में. इट इज प्रेजेंट मैक्सिमम इन हीमोग्लोबुलिन, दैट इज 70%, and 5% in myoglobulin, and 5% in present in 5% is present in iron containing enzymes, and 20% is stored as ferritin. ओके, सो हमारी बॉडी में मैक्सिमम जो आयरन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? 70% हीमोग्लोबुलिन में प्रेजेंट होता है, 5% मायोग्लोबिन में, और 5% जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आयरन कंटेनिंग जो एंजाइम्स हैं उसमें. देन 20% जो है वो फेरिटीन के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है. ओके, देन सोर्सेस ऑफ आयरन, दिस आर द सोर्सेस ऑफ आयरन. फूड्स हाई इन आयरन, तो बीफ स्प्लीन, देन पोर्क लिवर, देन क्लैम्स, पोटैटोज,
beans, lentils, spinach, fortified cereals. Then RDA for the iron. Iron requirement depends on various factor like menstrual loss. Okay, so आयरन जो रिक्वायरमेंट है वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि क्या, मेंस्ट्रुअल लॉस. ठीक है, वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ब्लड लॉस होता है, तो ब्लड लॉस होने की वजह से वुमेन को और आयरन की ज़रूरत पड़ती है. ओके, सो एक्सपेंशन इन ब्लड वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग फीटल ग्रोथ एंड इन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डेली लॉसेस ऑफ ऑल इंडिविजुअल. ठीक है, तो आयरन जो है वो हमारे ब्लड वॉल्यूम में क्या होता है, एक्सपेंशन इन ब्लड वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ठीक है, आयरन जो है वो ब्लड में एक्सपेंशन होते हैं कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग फीटल ग्रोथ एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन. ओके, सो जब मदर जो है वो प्रेग्नेंट होती है, मतलब एक वुमेन अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसको आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है. क्यों? क्योंकि फीटल ग्रोथ के लिए. चिल्ड्रंस में भी आयरन की ज़रूरत ज़्यादा होती है क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं. ठीक है, देन दिस इज द RDA फॉर आयरन फॉर इन्फेंट 0 to 6 month, 0.27 mg per day for males and 0.27 mg per day for females. Then 7 to 12 month, 11 mg per day for both. 1 to 3 years, 7 mg per day for both. 4 to 8 years, 10 mg per day for both. Then 9 to 13 years, 8 mg for both. Then 14 to 18 years, 11 mg for males and 15 mg for female. Then 19 to 50 year, 8 mg for male and 18 mg for female. Then 51 year and older, 8 mg for male and 8 mg for female also. Okay, and for pregnant women 27 mg per day. Then function of iron, transportation of oxygen and the storage of oxygen. Okay, so it helps in oxygen transporting and the storage of oxygen. Then component of several enzymes catalyzes the cytochromes xanthine oxidase. Okay, so iron क्या है, several enzymes का component है. कौन से enzymes का? catalysis, cytochromes और xanthine oxidase. Then formation of red blood cells, so it helps in formation of red blood cells यानी कि RBCs. Then absorption, the absorption of iron from food varies depending on whether heme और non heme iron consumed. Okay, so iron का जो absorption है वो जो अलग अलग तरीके के फूड से हम ले रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि वो हीम कंज्यूम कर रहा है या नॉन हीम आयरन जो है कंज्यूम्ड है. ठीक है, देन एन इंडिविजुअल विथ मॉडरेट आयरन स्टोर्ड would be expected to absorb about 23% and a non-heme iron absorption varies from 3 to 8% in the individual. Okay, so मॉडरेट आयरन जो है वो स्टोर्ड होगा. कैसे? एक्सपेक्टेड कितना है वो, कितना एब्जॉर्ब होगा, 23% जो है वो होगा और नॉन हीम एब्जॉर्प्शन 3 to 8%. तो 23% हीम आयरन कंज्यूम्ड और 3 to 8% जो है वो नॉन हीम आयरन कंज्यूम्ड होगा. देन इन विथ मॉडरेट आयरन स्टोर्स डिपेंडिंग ऑन एब्जॉर्प्शन इनहेंसिंग फैक्टर. ओके, सो मॉडरेट आयरन स्टोर्स के लिए वो किस पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन इनहेंसिंग फैक्टर, मतलब हम जो क्या बॉडी एक्टिविटी कर रहा है, हमारा जो एक्टिविटी है बॉडी की, उसके हिसाब से वो जो इनहेंसिंग फैक्टर होगा एब्जॉर्प्शन के लिए उस पर वो डिपेंड करेगा. ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन इज विटामिन सी, दैट इज सम एनिमल फूड. ओके, सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, आयरन के एब्जॉर्प्शन, ठीक है, विच इंक्रीजेस आयरन एब्जॉर्प्शन, जो कि इंक्रीज करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को, वो कौन सा फैक्टर है, विटामिन सी. ठीक है, जो कि क्या है, एनिमल फूड, कुछ एनिमल फूड से जो मिलता है विटामिन सी वो. देन डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ठीक है, दिस इज द मेन सिम्टम और मेन डिसीज और डिसऑर्डर
of iron deficiency. So these are the symptoms of iron deficiency anemia: hemorrhage, skin becomes pale, person becomes weak and gets easily fatigued, headache, dizziness, reduced work capacity, irritability and restless, fingers nails become thin and flat. Okay. So next is iodine. What is iodine? Iodine is micromineral. We all know this is a micromineral which is found in thyroid, where it is stored in form of thyroglobulin. Okay, ये क्या है, कहाँ पाया जाता है? ये थायराइड में, बट ये किस फॉर्म में स्टोर होता है? थायरोग्लोब्यूलिन. इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थायराइड हार्मोन thyroxine T4 and a triiodothyronine, that is T3. Okay. Then sources of iodine: seaweeds, sea salt, strawberries, fennel, Himalayan crystal salt, broccoli, coconut oil, spinach, cranberries, then watercress. RDA for iodine for children 1 to 3 years 90 mcg per day. Okay. Then 4 to 8 years 90 for both. Then 9 to 13 years 120 mcg for both male and female. Then 14 to 18 year 150 for both, and older यानी कि 18 plus 150 for both. Then for pregnant women 220 mcg per day, and for the lactation mother 290 mcg per day. Then function of iodine: iodine is constituent of thyroid hormones thyroxine and a triiodothyronine, that is T3. Okay. सो आयोडीन किसका कॉन्स्टिट्यूट है? थायराइड हार्मोन्स का. कौन कौन से हार्मोन है वो? थायरॉक्सिन यानी कि T4 एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी कि T3. देन थायराइड हार्मोन्स रेगुलेट्स द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन विद इन द सेल. अब ये थायराइड हार्मोन क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन को रेगुलेट करते हैं. ठीक है, रेगुलेट द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन विद इन द सेल. सेल के अंदर क्या कर रहे हैं वो? हमारे ऑक्सीडेशन रेट को, यानी कि सेल के अंदर उसके ऑक्सीडेशन रेट को रेगुलेट कर रहा है. देन इट इन्फ्लुएंसेस फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ. फंक्शनिंग ऑफ नर्वस एंड मसल टिश्यू, it also helps for the normal functioning of nervous and muscle tissue, circulatory activity and the metabolism of all nutrients. It is the hormones which is also essential for reproduction. Okay, so these are the function of iodine. Then metabolism: iodine is obtained from food as inorganic and as organic compound. Okay, फूड से हम आयोडीन को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही कंपाउंड में हमें मिलता है. देन व्हेन इट रीचेज द डाइजेस्टिव ट्रैक, आयोडीन इज स्प्लिटेड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इज रैपिडली एब्जॉर्ब्ड इन इनऑर्गेनिक आयोडीन. ओके, समझ में आया? जैसे ही ये डाइजेस्टिव ट्रैक में पहुंचता है, आयोडीन जो है वो स्प्लिट होने लगता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से. ठीक है, और रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है इनऑर्गेनिक आयोडीन के फॉर्म में. Then the amount and rate of absorption depends on level of circulating thyroid hormone. ठीक है, अब कितने अमाउंट में एब्जॉर्ब हो रहा है? द अमाउंट एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. अमाउंट और रेट जो एब्जॉर्प्शन का वो किस पे डिपेंड करेगा? कि लेवल पे. किसके लेवल पे? सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन. ठीक है, थायराइड हार्मोन जो है वो कितना सर्कुलेट हो रहा है उसके लेवल पे डिपेंड करेगा कि कितने अमाउंट में और कितने रेट में एब्जॉर्ब होगा. Then 1/3 of iodine is absorbed by thyroid gland. Okay, so 1/3 पार्ट जो आयोडीन का है वो कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है? किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है? थायराइड ग्लैंड के थ्रू. देन द रेस्ट ऑफ इज रिमूव्ड बाय किडनी एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन. बाकी जो बचा, जो रेस्ट आयोडीन बचा, उसका क्या हुआ? किडनी जो है वो किडनी की द्वारा रिमूव हो गया और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो गया. देन आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर. फर्स्ट इज हाइपोथायरॉयडिज्म. ओके, हाइपो मीन्स कम, ठीक है, हाइपर मीन्स ज़्यादा, तो हाइपोथायरॉयडिज्म. देन गॉइटर. अदर सिम्टम्स आर मेटाबॉलिक रेट इज़ वेरी लो, मस्कुलर फ्लैबिनेस एंड वीकनेस, ड्राई स्किन, enlarged tongue and thick lips, mental retardation,
and last is weak abdominal muscles. First one image is goiter. Second is also goiter but from the inside. Okay, so this is a thyroid gland which get enlarged. Okay, so this is the outer look of goiter and this is the inside of goiter, means enlargement of the thyroid gland. Then fluorine. Fluorine, it is mainly found in bones and teeth. Okay, then sources of fluorine, drinking water is main source. Then the content of fluorine is in water is dependent on the soil content of fluorine. ठीक है, जो सोर्स है यानी कि जो कंटेंट है फ्लोरीन का वो वाटर में कैसे होगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि सॉइल कंटेंट पे. ठीक है, मतलब हर जगह पे फ्लोरीन जो है वो पूरी तरह से नहीं पाया जाता, हर जगह के पानी पे नहीं पाया जाता. ठीक है. Then RDA for fluorine 1 to 2 ppm parts per million. Okay, then fluorine is supplemented in various toothpaste preparation. Okay, फ्लोरीन जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें भी क्या होता है, फ्लोरीन अवेलेबल होता है. ताकि क्यों, ये कहाँ पाया जाता है, मैक्सिमम बोन्स और टीथ में. ओके, सो टीथ को मेंटेन करने के लिए टूथपेस्ट में फ्लोरीन का यूज़ किया जाता है. Then deficiency and toxicity. So deficiency causes drinking water that is low in fluorine content. Okay, अगर water में fluorine का content नहीं है तो deficiency होगा definitely. Then fluorine deficiency causes dental caries. Okay, अगर fluorine का deficiency हो रहा है तो वो क्या cause करेगा, dental caries. Then toxicity. Excessive amounts of fluoride can result in dental fluorosis and skeletal fluorosis. Then dental fluorosis is an important public health problem in several countries including India. Okay, so fluorine deficiency symptom: growth retardation and a reduction in fertility, anemia, increase the incidence of dental caries and osteoporosis. So these are the symptoms of deficiency of fluorine. Okay, so today we have done micro minerals. Hope you will like it and you will understand this. Thank you so much.